Hello dear students, today we are going to start our next topic, resultant force. Now we will discuss about resultant force. In many situations, more than one force act on a body at the same time. All these forces collectively produce the same effect in the body as if a single force is acting on the body. Such a single force is called the resultant force. मीन्स टू से डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो उन सभी फोर्सेस का एक रिजल्ट होगा। मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट होगा किसी ना किसी तरफ मूव करेगा और जिस तरफ वो मूव करेगा वो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, द रिजल्टेंट फोर्स मे बी डिफाइंड एज द सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट as done by all the forces collectively is called the resultant force. So let us understand this definition, dear students, by taking an example. Dear students, suppose three forces are acting on a box from left to right. Force F1 2 Newton, F2 3 Newton and F3 5 Newton. Then the resultant force will be from left to right and the resultant force will be 10 Newton. And the direction of that resultant force will also be from left to right. Dear students, according to definition, अगर left to right एक single force 10 न्यूटन लगा दें हम, वो बॉक्स को left to right डिस्प्लेस कर देगा। या फिर थ्री फोर्सेस हम 2 न्यूटन 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन लगा दें तो उनका रिजल्टेंट भी लेफ़्ट टू राइट ही होगा। Now let us understand this concept by taking more numerical problems. Now first problem, when the two forces act along the same line. Suppose two persons are applying the force on a box in the same direction. First person is applying 100 Newton, second 150 Newton force from left to right. Then the resultant force will be the sum of these two forces, that is 100 plus 150 Newton, that is total sum will be 250 Newton from left to right. Now in second case, suppose two persons are applying force in opposite direction. First person is applying from left to right with 250 Newton and second is from right to left with force 150 Newton. Then the resultant force obviously will be left to right because the person in orange shirt is applying more force. The resultant force will be 100 Newton from left to right. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज टू पर्सन्स आर अप्लाइंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द कार. फर्स्ट पर्सन 50 न्यूटन एंड सेकंड इज आल्सो 50 न्यूटन. देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? इट इज़ ऑब्वियस 0 न्यूटन because force of first person is balanced by the second person. So dear students, from here one more new concept comes, that is balanced and unbalanced force. So firstly we will discuss about balanced force. When the resultant of all the forces acting on a body is 0, the forces are said to be balanced force, as we have done in previous numerical, dear students. And the balanced forces, first one, cannot set any stationary body into motion. जैसे वहाँ पे कार मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है. कैन नॉट चेंज द स्पीड वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग बॉडी. मूविंग बॉडी को भी अगर हम फोर्स अप्लाई करें और वो बैलेंस फोर्स हो तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी. थर्ड पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, द फोर्स मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन सॉफ्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, हम किसी स्पॉन्ज को दोनों तरफ से अपने हाथों से दबाएं तो वो फोर्स लगाने की वजह से वो जो स्पॉन्ज है वो श्रिंक हो जाती है. नाउ डियर स्टूडेंट, इफ़ वी डिस्कस अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्स. सपोज यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जांपल, टीम ए जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है टीम बी से, तो जो टीम ए है वो दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच के ले जाएगी, तो वो ये अनबैलेंस्ड फोर्स की एग्जाम्पल है. So what we can say, if force applied by A is greater than force applied by B, then the resultant force will be toward A. And same way, if we take again one more example, if force applied by B is more than force applied by A, then the resultant force will be toward
फोर्स अप्लाइड बाय बी, तो रिजल्टेंट फोर्स बी की तरफ होगी क्योंकि बी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है. So dear students, now we can say the unbalanced force can set a stationary object in motion. जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको मोशन में लेके आ सकता है फोर्स. सेट अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रेस्ट में लेके आ सकता है फोर्स. एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में समझेंगे. तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. सपोज इन फर्स्ट एक्टिविटी a ball is at rest and when we just push a ball with our hand it starts moving. तो वी कैन से अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको हम मोशन में लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, वी कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी विद हेल्प ऑफ फोर्स. फोर्स अप्लाई करके हम किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे क्रिकेट में बैट्समैन है जो बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो ऐसे हम फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. फोर्थ रिजल्ट ऑफ फोर्स इज डियर स्टूडेंट्स, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे हम किसी बैलून को दोनों तरफ से प्रेस करें तो उसकी शेप आप देख सकते हो डिस्टॉर्टेड बन जाती है. We can say the force can change the shape of an object. Similarly, dear student, force can change the size of an object also. For example, if we pull a spring from the both side, then you can see the size of the spring will increase. So this show that the force can change the size of an object also. Similarly, dear students, force can change the speed of an moving object also. For example, if we kick harder to the coming football, its speed increases. This show that the force can change the speed of an moving object. So now dear students, few questions are there for you related to today's learning. So please try to attempt these questions. Thank you.